On nice question. Okay, sit down. So situation depends on all kinds of criteria. Okay. Now, what kind of is it? He has come to a pub or he has come to a marriage event. What kind of an event? First situation. Okay. Second situation. Now, the type of alcohol the person has consumed. अभी for an example, आप किसी भी दारू पिए हुए आदमी को अगर उसको ज़्यादा हो चुका है, तो nowhere in this world कि मैं भी अगर मैनेजर हूँगा, बार मैनेजर हूँगा, मैं जाके नहीं समझा पाऊँ। समझ में आएगा उसको? नेक्स्ट डे उठ के पूछेगा, यार मैंने कुछ किया था क्या? मैंने कुछ बदतमीजी तो नहीं की ना? ठीक ठाक था ना? उसको भी होश में नहीं रहता है। So one cocktail, let us do it and then we'll do the physics. Now we cocktail. Okay. So basically now the rules for making cocktail. The first rule, जैसे कि हम जो bartending पे बोलते हैं, the first rule is always put cheap ingredient first. अभी ये cheap ingredient first क्यों बोल रहा हूँ? जैसे for an example, अभी मैं cocktail बना और मैंने लिया whiskey और मैंने डाला और फिर मैंने बाकी के ingredients डाल दिए। अब समझो, in case अगर वो cheap ingredient जैसे जूस है, जूस तो सस्ता आइटम है। अल्कोहल आपका 1000 रुपए का बॉटल है, अल्कोहल की प्राइस है 1000 रुपीस। अगर इसको डिवाइड करूंगा पर पैक, एक बॉटल में कितने पैक बना सकते हैं? एग्जैक्टली 25 पैक्स नहीं बना सकते। इट इज 24। वी कैलकुलेट एज अ बारटेंडर, वी कैलकुलेट इट एज 24। आप डिवाइड करोगे 750 बाय 30 ml, इट विल बी 25 पैक्स। बट लेकिन कुछ ना कुछ अल्कोहल आपके बॉटल में रह जाएगा, कभी स्पिलेज हो जाएगा, तो हम 25 पैक्स नहीं पकड़ते, हम 24 पैक्स पकड़ते हैं। तो एक पैक की कीमत अगर समझिए 1000 रुपीस है अल्कोहल बॉटल की, सो एक पैक की कीमत आपकी होगी 30 ml का कितना होगा? 42 रुपीस, मतलब अप्रॉक्स 42 रुपीस। अब समझिए मैं विस्की साफ कर रहा हूं और मैंने क्या किया, मैंने विस्की लिया, मैंने डाल दिया, विस्की डाल दिया, फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले, अब मैंने एक वाइट लिया, एक बाहर निकली, जो फॉर एग्जांपल ये ब्लड फिल्ट्रेशन या ब्लड लिमिट है, इस बॉटल की कीमत 70,000 है और इसका ढक्कन गायब। तो भाई वो महीने का सैलरी और उसके 5-6 महीने का सैलरी आप हो जाए। कभी भी आप शेक करते हो तो ऐसे गैस के सामने मत करना, क्योंकि हो सकता है हाथ से स्लिप हो जाए या ठंडा हो जाए, हाथ से स्लिप हो जाए। तो कभी भी जो शेक करेंगे हम आइदर दिस साइड और विल डू इट दिस साइड। अभी इसमें मेथड्स हैं, टीचर मेथड है, आइदर विद द स्पाइक। ओके, तो नाउ 20 seconds। Okay.